Good morning, students. Today we will discuss about latent heat. Before understanding it, we will talk about temperature. Okay, temperature is the thermal properties of matter. It is the measure of degree of hotness and coldness of a body, and also the temperature is the effect of heat. Okay, when we give a heat to a substance, its temperature is increases. जब आप किसी substance या किसी matter को heat करेंगे, ठीक है, तो उसका temperature क्या होगा? Increase होगा. Now common unit of temperature is degree Celsius. The temperature at which ice is melts is 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius ice is melts. Okay, and the temperature at which water is boil is 100 degree Celsius. Now SI unit is Kelvin. Okay, common unit of temperature is degree Celsius, but the standard unit of temperature is Kelvin. Now relation between Kelvin scale and Celsius scale of temperature is temperature on Kelvin scale equals to temperature on Celsius plus 273. Okay, now question is convert the temperature of 25 degrees Celsius to the Kelvin scale. Okay, we have to convert 25 degrees Celsius into Kelvin. Okay, so we add 273 on degree Celsius. अगर आपको टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है और हमें इसे केल्विन में चेंज करना है, तो इस टेम्परेचर में हम 273 ऐड कर देंगे. ओके, नाउ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन इज 273 केल्विन. ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर in Kelvin is 373 Kelvin. Now latent heat. It is also known as hidden heat. Okay, why we called it hidden heat? Because normally when heat is given to a substance, then its temperature rises. Okay, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप हीट देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर नॉर्मली इंक्रीज होता है. इट मीन्स it shows the presence of heat, but latent heat does not increase the temperature. Okay, and if temperature is not increased, so we will not know about the heat. अगर temperature increase नहीं होगा तो हमें heat के बारे में पता नहीं लगेगा. Okay, therefore the latent heat is known as hidden heat. Okay, इसको हम छुपी हुई heat भी कहते हैं. Now definition of latent heat: the heat energy which has to be supplied to change the state of substance is called its latent heat. Okay, we will understand it from the graph. Now we plot the temperature versus heat graph. Okay, as temperature heat is increases, now temperature is also increases, but at some points the temperature remains constant. Okay, so why this will happen, we understand it. Okay, now we take 1 kg of ice in a beaker and is heated. Before heating, the temperature of ice is minus 3 degree Celsius. At starting point, the temperature of ice is minus 3 degree Celsius before we will हीट इट. ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे उससे पहले उसका टेम्परेचर कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस. ओके, as we heat the ice, its temperature increases. Okay, and then suppose after heating, first its temperature is -2 degree Celsius, and then -1 degree Celsius, and then it rises to 0 degree Celsius. Okay, जैसे जैसे हम हीट देंगे टेम्परेचर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा. ठीक है, बट एट 0 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ आइस is stops rising. Okay, now ice starts melting. ठीक है, at 0 degree Celsius ice starts melting, but we have constantly supplying heat. Okay, we have not stopped supplying heat, still temperature is constant. अगर temperature constant भी हो जाएगा मगर हमें heat क्या करनी है, constantly उसको supply करनी है substance को. Okay, during melting process the temperature remains constant. ठीक है, जब तक ice पूरी की पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, नाउ एट नाउ वंस द आइस इज मेल्ट्स कंप्लीटली. ओके, remember that we are constantly supplying heating. Now water now when ice melts into water, okay, then water is heated again, temperature rises. Okay, temperature rises up to 100 degree Celsius. Okay, temperature rises up to
100 degree Celsius. At 100 degree Celsius again the temperature rises stops. ओके, जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस समय दोबारा से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा. ओके, एंड एट दिस पॉइंट द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू water vapor. Okay, because here the boiling process is start. Okay, so during boiling process the temperature remains again constant, and once the water is completely converted into vapors, then again the temperature increases. Okay, so from the graph we can say that as we increase the heat the temperature is rises. Okay, but at melting and boiling process the temperature remains constant. Okay, क्योंकि ठीक है, अब आपने हीट दी है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पर क्या है, लेटेंट हीट है, यही लेटेंट हीट है. ओके, लेटेंट हीट कहाँ है, मेल्टिंग प्रोसेस में और बॉइलिंग प्रोसेस में. ओके, ओके, बट जब हम टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ तो वो हीट जो हमने सब्सटेंस को दी वो गई कहाँ. ओके, इट मीन्स वो लेटेंट हीट कहाँ छुपी है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट. So first, at the melting point of ice, when we heat ice, it's gain heat energy. अगर हम किसी को heat दे रहे तो वो heat energy gain करेगा, and that heat energy is used up by the solid particle to overcome the force of attraction between them. Okay, जो solid particles होते हैं उनके बीच में force of attraction बहुत ज़्यादा होता है. उन force of attraction को overcome करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो उस हीट एनर्जी को यूज करेंगे. ओके, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड पार्टिकल्स में, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम होता है. ओके, तो लेटेंट हीट कहाँ गई, लेटेंट हीट इज यूज्ड अप बाय द पार्टिकल्स चेंजेस इनटू डिफरेंट स्टेट. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होने के लिए जो हीट हमने दी थी वो हीट उनने यूज कर ली. अंडरस्टैंड. नाउ बॉइलिंग पॉइंट सेम. ओके, व्हेन वी हीट द वाटर, ओके, सो द हीट एनर्जी इज गिवन is used up by the liquid particles, okay, to change into the gas particles to overcome the force of attraction. Okay, similarly gas particles have less amount of force of attraction, but the liquid particles has more force of attraction. Okay, so to overcome this force of attraction they used up the heat एनर्जी. जो हीट हमने दी थी वो उसने किस में यूज कर ली, अपनी स्टेट को चेंज करने में. इट मीन्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में. ओके, नाउ अगेन द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. नाउ अंडरस्टैंड इट. लेटेंट हीट क्या होती है, किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने में जो एनर्जी यूज होती है दैट इज द लेटेंट हीट. यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज नहीं होगी, वो हीट किस में यूज हो गई, चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ लेटेंट हीट आर ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स सॉलिड टू लिक्विड चेंज. ओके, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में. सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kilogram of the solid to liquid without any change in temperature. Okay, simply we can say that latent heat of fusion is the quantity of heat which is used to convert solid into liquid without any change in temperature. solid से liquid में change करने में और temperature को change नहीं करना है. Okay, now latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg. Now heat energy is used up in changing the state of solid substance by overcoming the force of attraction between its parts. Similarly, latent heat of vaporization, the latent heat of vaporization of liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of liquid,
okay, to vapor or gas without any change in temperature. In simple language, latent heat of vaporization is the heat energy, okay, which is required to change the particles of liquid into gas. Okay, now latent heat of vaporization of water is 2.25 into 10 to the power 5 joule per kg, and the heat energy supplied to a boiling liquid is used up in changing the state of liquid substance by overcome the force of attraction between its particles. Okay, now from here the melting point. What is the melting point? The temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid. Okay, melting point वो होता है कि वहां पर क्या होता है, जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में. ओके, नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री Celsius. Boiling point, the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point. Simply, boiling point is that temperature at which the water, yeah, it means liquid state, changes into gaseous state. Okay, example, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. Now one question is arises here, why the burns caused by steam are much more severe than caused by boiling water. ओके, जो स्टीम होती है उससे अगर हमारा हाथ जल जाता है तो उसमें ज़्यादा हमें दर्द होता है अगर बॉइलिंग वाटर से जले उसकी अपेक्षा. ओके, वाई? बिकॉज it is this is due to the fact that steam contains more heat in the form of latent heat, okay, than boiling वाटर. आपको पता है वाटर बॉयल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस पे किस में जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में. ठीक है, बट जो वेपर्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा क्या है, लेटेंट हीट है. ओके, क्या है, लेटेंट हीट. एंड ड्यू टू दिस लेटेंट हीट, ओके, the burns caused by steam are much more severe. Okay,